My name is Rushik Desai. Welcome to GST Solution. Friends, today we are going to discuss about taking of input tax credit in respect of material being sent to job worker, that is input sent to job worker or the capital goods sent to job worker. Friends, the term job work is very important subject. Though there is no tax implications under the job work, that is the goods supplied under the job work, but then also the legislator have given a detailed procedure about the job work procedure, how the process needs to be carried out, how the material needs to be sent to the job worker, what are the precautions that needs to be taken care by the principal, what are the conditions that the principal and the job worker both needs to adhere to. Job work means a treatment or a process that is undertaken by a person on a goods belonging to someone other. It means there exist certain pre-assumptions, and that pre-assumptions are there must be two parties, that is first is principal and another is job worker. Now who is the job worker? So friends, the person who does the work of job worker will be considered as a job worker. Another assumptions, that is the material needs to be sent by the principal and the process needs to be done by the job worker, and the input tax credit needs to be availed by the principal. So friends, for example, a big shoe manufacturing company, that is a principal, it sends a half-made shoes to the small manufacturing company for fixing a sole. Now the manufacturing company, that is a big manufacturing company, is a principal, and a small manufacturing company to whom the principal is sending the goods, that is half made shoes for fixing the sole in the shoes, it will be considered as a job work process. Now friends, let us start quickly what does section 19 has to say. Friends, section 19 gives certain conditions and certain restrictions which the job worker needs to be adhered to. So subsection 1 of 19 says the principal shall be allowed the input tax credit in respect of any input or the capital goods which is sent to the job worker. Subsection 2 says, you forget about section 16 subsection 2. Now what does section 16 subsection 2 says? So there are preconditions, that is the goods and services must be received. Section 16 says the goods and services must be received. Now friends, here section 19 subsection 2 says, you forget about section 16.2. Even if the goods or the inputs or the capital goods is not been received by the principal in his factory, but is directly sent to the job worker, then also the principal will be allowed to take the input tax credit in respect of input or a capital goods which is sent to the job worker. It means अगर प्रिंसिपल कोई सप्लायर के पास से गुड्स प्रोक्योर करके डायरेक्टली प्रोसेसिंग करवाने के लिए जॉबर को भेज देता है विदाउट टेकिंग द इनपुट्स इन हिज हैंड, विदाउट टेकिंग द डिलीवरी एट हिज फैक्ट्री, if is directly sending such inputs to the job worker, then also that credit will be eligible to the principal. That is what subsection 2 of section 19 has to say. Now subsection 3 of 19 says that if the input is not received back from the job worker premises to the principal, then what happens? So friends, if the inputs, that is the material being sent to job worker for the job work process, if not received back by the principal within the prescribed time, then it will be deemed that such principal has supplied the material, that is sold the material to the job worker from the day when it was firstly sent for the job worker purpose. उसी दिन से मान लिया जाएगा कि अगर बैक नहीं आया तो उसी दिन से मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई कर दिया है, सेल कर दिया है, और उसके ऊपर का टैक्स जो है वो प्रिंसिपल को भर देना पड़ेगा. नाउ कितने दिन में उसको वापस लाना पड़ेगा? मटेरियल जो एक बार प्रिंसिपल भेज देता है वो कितने दिन में मटेरियल वापस लाएगा? That has been given in section 143. Against there are certain rules also which needs to be adhered to. By fulfilling that rules only, the input tax credit in respect of input or capital goods will be allowed to the principal. Now subsection 5 of section 19 has to say, similarly in the way of inputs, when a principal is sending a capital goods to the job worker for the process of job work, and if that capital goods is also not received back by the principal within the prescribed time, then
it will be deemed that such capital goods has been sold by the principal to the job worker on the very day when it was first sent to the job worker for the process of job work. मान लिया जाएगा कि आपने उसको बेच ही दिया है, प्रिंसिपल ने उसको बेच ही दिया है, ऐसा ही डीम कर दिया जाएगा और उसको फिर जीएसटीआर 1 में ट्रीटमेंट देके उसके ऊपर का जो टैक्स है वो बकायदा भर देना पड़ेगा। Subsection 1, 2, 3, 4, 5 and 6 will not be applicable in case you are sending any dies, molds, jigs, fixtures or tools to the job worker for the process of job worker. छोटी छोटी चीजें अगर जैसे आप डाइस, मिल्स, जिग्स, फिक्सचर्स और छोटे छोटे टूल्स अगर आप बेचते हो तो उसको वापस लाने की जरूरत नहीं है, वो जॉब वर्क के प्रोसेस में उसको नहीं गिना जाएगा। Now friends, what is the procedure? So this is all we had discussed. Section 19 is all about the conditions for taking input tax credit by the principal. Now what is the procedure? So procedure has been given in section 143 of the CGST Act 2017, wherein it has been said that a registered person may send the input or the capital goods without payment of tax to the job worker. एक चीज यहाँ पे सामने आई है, अगर कोई प्रिंसिपल किसी जॉब वर्क को गुड्स बेच रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भरने का जरूरी नहीं है। It will be not be leviable to GST since that material is again coming back to the principal. Principal के पास वो आने ही वाला है material back. 19 में हम लोग अभी जो पढ़ के आए हैं, that says if that material is not received back within the prescribed time, then it will be considered as it is sold. Otherwise, it is not sold. It is sent for the job work process, and again it will come back to the principal. And hence, Section 143, that is the procedure, says that the registered person may send the goods without payment of tax, since it will not be considered as a supply. Supply नहीं है तो उसके ऊपर का टैक्स भरना भी जरूरी नहीं है. But friends, we talk a lot about the prescribed time. Now, what is the prescribed time? So, the prescribed time is different for inputs as well as capital goods. If at all the principal is sending the inputs to the job worker, then that inputs converted into finished goods will have to reach to the principal, will have to be returned by the job worker to the principal within 1 year from the date of receipt of such inputs. And if it is a capital goods, then 3 years. इनपुट्स अगर कोई बेचता है तो 1 साल में जॉब वर्कर को वापस दे देना है प्रिंसिपल को, और अगर कोई कैपिटल गुड्स लेता है, कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल अगर कोई जॉब वर्कर को देता है तो जॉब वर्कर को 3 साल के अंदर वो कैपिटल गुड्स है वो वापस प्रिंसिपल को लौटा देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द सेक्शन 143, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ जॉब वर्कर सेज। नाउ इफ there might be conditions and there might be situation कि वो इनपुट जो आपने बेचा है, कैपिटल गुड्स जो आपको बेचा है वो नहीं लौटा पाता है जॉब वर्कर, then what happens? तो similarly in the same way friends, उसको सप्लाई मान दिया जाएगा और उसके ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स का पेमेंट आपको कर देना पड़ेगा। The principal will have to do the payment of tax. It will be considered as a deemed supply और वहां से ही उसको बेच देना पड़ेगा। Now friends, in this there are two situations also wherein it has been prescribed that a principal can supply the material. जॉब वर्क होने के बाद सप्लायर के पास, दैट इज प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है, या तो वो मटेरियल अपने पास वापस ले लेता है या तो वो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर की प्रीमाइसिस में ही उसको किसी और कस्टमर को भेज देता है। दैट इज एन ऑप्शन गिवन टू द जॉब प्रिंसिपल। इफ आफ्टर कंप्लीटिंग अ वर्क of job work from one job worker, it has to be given to the another job worker. Similarly, वापस वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। And if again that material will also, if not received within the prescribed time, then उसको भी मान लिया जाएगा कि वो सेल कर दिया है और उसके ऊपर का जो सेल का टैक्स है वो भर देना पड़ेगा। Now, whose responsibility is to maintain this register? So प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि उसको पूरा अकाउंटिंग रखना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल कौन सी तारीख को कौन से जॉब वर्कर के पास में बेच रहा हूँ और विद इन व्हाट टाइम इट नीड्स टू बी टेकन बैक, रिटर्न लेना है, कभी लेना है, अगर नहीं आता है तो उसको भी अकाउंट उसका रखना है और उसके ऊपर जो बकायदा टैक्स होता है वो भर देना है। Now friends, during the process of job work, it may happen that there are certain waste or scrap at the premises of job worker. जो प्रिंसिपल ने इनपुट्स दिया है, कैपिटल गुड्स दिया है, उसमें कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल गया, कुछ स्क्रैप निकल गया, तो वो स्क्रैप और प्रोसेस का क्या करना है? तो वो स्क्रैप और प्रोसेस के लिए भी इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 143, दैट इज द प्रोसीजर दैट उसको विद पेमेंट ऑफ टैक्स वहां से प्रिंसिपल, अगर आपका जो जॉब वर्कर है वो रजिस्टर्ड है तो उसी के प्लेस से आपको भेज देना पड़ेगा। जॉब वर्कर हैव टू पे द टैक्स। And if the job worker is not registered person, then the principal has an option to send the material from the premises of job worker with applicable of GST at the rate whichever is applicable. Now friends,
Let us go to the rule number 45. What does rule number 45 has to say? So rule number 45 says that there are certain conditions and restrictions. By adhering to that only, the principal will have to get the, and principal will be eligible to take the input tax credit in respect of input or capital goods sent to the job worker. Now friends, what are such conditions? So condition number 1, प्रिंसिपल जो भी मटेरियल जॉब वर्क को बेच रहा है, आई मीन जॉब वर्क प्रोसेस के लिए दे रहा है, सबसे पहला इट शुड बी अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चलान. Delivery challan is for the purpose when you are sending the material to the job worker on a free issue basis, wherein you are not charging any tax. Second, delivery challan में content क्या क्या होना चाहिए? तो it has been prescribed in rule number 55 that name of the consignor, name of the consignee, GST number, the rate, टैक्स एंड एवरीथिंग. जितना भी वो रूल नंबर 55 में बोला है वो सारा डिटेल्स आपको डिलीवरी चालान के अंदर करना पड़ेगा. दैट वाज कंडीशन नंबर 2. नाउ कंडीशन नंबर 3, the details of the input or the capital goods which has been sent to the job worker has to be filled by the principal in GST ITC 04. GST ITC 4 जो रिटर्न है वो प्रिंसिपल को भरना पड़ेगा. कब भरना पड़ेगा? सो 25th डे, दैट इज ऑन और बिफोर द 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर. क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आता है उसके ऑन और बिफोर 25वें दिन तक प्रिंसिपल को जीएसटी आईटीसी 04 भर देना है, जिसके अंदर उसको पूरा रिकंसिलेशन देना है. इतना इनपुट्स मैंने दिया था, उसमें से इतना मेरे पास वापस आ रहा है, इतना 6 महीने के बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, एज एन कंडीशन वॉट एवर इट मे बी. नाउ फ्रेंड्स, अगेन जो मटेरियल वापस नहीं आ पाता है उसका क्या करेंगे? इन अ लाइक वे सेल रिटर्न में बता देना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 में उसका लायबिलिटी डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको डीम कर दिया जाएगा कि वो सेल हो चुका है, वो मटेरियल बिक चुका है, और उसका लायबिलिटी अकाउंट करके उसके ऊपर टैक्स भर देना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन नंबर 19 ऑफ CGST Act 2017 related to job work procedure, and rule number 45, that is the condition, friends. I hope you like this video. Thank you very much for watching my video. Thanks a lot, friends.